हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अपने सीख क्या रहे हैं? जो स्टूडेंट बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यानी कि जो बुक रीडिंग, स्टोरी रीडिंग, पैराग्राफ वगैरह नहीं कर सकते, एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह नहीं लिख सकते, या जनरली जो है कि जो स्टूडेंट नहीं है बट इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल डेली यूजेस होती रहती है, क्योंकि हर जगह आजकल सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा होता है। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहता है, मैं उनके लिए क्लास लेकर आई हूँ। इसके पहले भी बहुत सारी क्लासेस करवा चुकी हूँ। अगर आप वर्ड थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, यानी कि छोटी स्पेलिंग जोड़ के पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या है, मैं स्टोरी की कुछ एक लाइनें लिखती हूँ, उसको विद स्पेलिंग आपको बोल बोल के बताऊंगी। अगर इतना भी आप नहीं पढ़ पाते, यानी कि छोटे वर्ड्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप पहले पीछे की क्लासेस देख लीजिए। उसमें अगर आपको एबीसी भी नहीं आता तो वो भी करवा रखी है, प्लस में मात्राएं, बारह खड़ी वगैरह सब करवा रखा है। अभी अपने क्या कर रहे हैं, स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जरूरी क्या है कि आप उस पर रेगुलर फोकस करें, रेगुलर स्टडी करें। जरूरी नहीं है इंग्लिश, अगर आपको हिंदी नहीं आता है, पंजाबी नहीं आता है, तो उसको सीखने के लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा, तो ही आप सीख सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश को पढ़ने लिखने के लिए भी आपको थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा, तो आप आराम से सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। स्टोरी की कुछ एक लाइनें मैंने लिख रखी हैं। अभी क्या है, अगर आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं साथ साथ में आपको बोल बोल के बताती चलूंगी कि कौन सा वर्ड कहाँ कैसे क्या लिखा हुआ है, और साथ साथ में इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? द, THE, द, THE, द, tortoise, 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 is, is, so, so, slow, 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 I, have, 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 plenty, 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 of, 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 time, 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 the, 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 two, TO2, sleep, 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 meanwhile, 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 the, 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 tortoise, 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 kept, 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 moving, 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 slowly, 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 but, 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 he, he, did, 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 not, 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 stop, 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 or,
or, O-R, or. Rest, R-E-S-T, rest, R-E-S-T, rest, and, A-N-D, and, A-N-D, and continued, continued, C-O-N-T-I-U-E-D, continued, continued, on, O-N, on, his, H-I-S, his, H-I-S, his, way, W-A-Y, way, W-A-Y, way। तो ये मैंने स्टोरी की लाइंस आपको विद स्पेलिंग बता दी है। कई बार क्या है, राइटिंग नहीं समझ में आती तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो मैं सब सोच के ही उसको साथ साथ स्पेलिंग बोल रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो समझ के होंगे। अभी इसको अपने हमेशा क्या करते हैं, 2 से 3 बार ही पढ़ते हैं ताकि आपको स्पेलिंग भी याद हो और उसको पता भी चले कि उसको कैसे पढ़ते हैं। तो एक बार शुरू करते हैं, वापस से आराम से पढ़ना है। द tortoise is so slow. I have plenty of time to sleep. Meanwhile, the tortoise kept moving slowly, but he did not stop or rest and continued on his way। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो पहली बार में आपको थोड़ा टफ लगता होगा कि हाँ कैसे पढ़ी जाएगी। दूसरी बार जब अपने पढ़ते हैं तो आपकी स्पेलिंग कुछ एक सही जाने लगती है कि हाँ हाँ ये ऐसे पढ़ा जाएगा। और थर्ड टाइम अपने क्या करते हैं, इसको हिंदी वाला नहीं देख के ओनली इंग्लिश पे फोकस करना है। आपने ईमानदारी से पढ़ना है, सीखना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से देख के पढ़ी जा रहे हो और आपको लग रहा है आप सीख रहे हैं। सीखने के लिए जरूरी क्या है, आप ईमानदारी से उसको पढ़े। यहाँ क्लास देखें, उसके बाद अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो आप वहां से भी प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे और हिंदी वाला ध्यान में नहीं रखना है, ओनली इंग्लिश देखेंगे और पढ़ेंगे। The tortoise is so slow. I have plenty of time to sleep. Meanwhile, the tortoise kept moving slowly, but he did not stop or rest and continued on his way। तो ये अपनी लाइनें थी, इसके आगे मैं अभी लिखती हूँ, फिर उसके आगे का पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं, साथ साथ में स्पेलिंग पढ़ेंगे और साथ में लिखेंगे। आप भी कोशिश करें कि आप स्पेलिंग साथ साथ में याद करते चले, ताकि आपको बाद में हेल्प मिलेगी पढ़ने के अंदर। आपको स्पेलिंग याद है तो आप फास्ट पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है, आफ्टर, A-F-T-E-R, आफ्टर, A-F-T-E-R, after, after a while, W-H-I-L-E, while, W-H-I-L-E, while, the, T-H-E, the, T-H-E, the, here, H-A-R-E, here, H-A-R-E, here, walk, W-O-K-E, walk, W-A-K-E, walk, up, U-P, up, U-P, up, and, A-N-D, and, A-N-D, and saw, S-A-W, saw, S-A-W, saw, the, T-H-E, the, T-H-E, the,
tortoise, tortoise, tortoise. Ahead, 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 of, 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 him, 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 the, the, here, here है ये, here, tried, 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 tried to, run, 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 fast, 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 but, but, it, it, was, 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 to, to, late, 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 the, tortoise, tortoise, crossed, 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 the, finish, 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 line, 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 first, first, first. तो ये हमारी स्टोरी की लाइंस थी। इसको 2 बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद क्लास स्टॉप करेंगे। ज्यादा बड़ी क्लासेस मैं नहीं लेती हूँ, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम लगा के आप आराम से सीख सकते हैं। डेली के 10 मिनट भी आप अगर निकालते हैं तो आप आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि घंटा आधा घंटा की क्लास में नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। पहले की तरह ही ईमानदारी से पढ़ना है, कोशिश करना है पहले की जो गलती हुई है उसको इम्प्रूव करने की। अगर आप बिल्कुल बेसिक से ही सीख रहे हैं तो फिर आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करें इसको पढ़ने का। क्या लिखा है? आफ्टर अ while the hare walk up and saw the tortoise ahead of him. The hare tried to run fast, but it was too late. The tortoise crossed the finish line first. तो आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। कुछ एक वर्ड्स जो है ना, आपको ऐसे लग रहा होगा कई वर्ड में क्या होता है, जैसे साउंड नहीं आता, जो साइलेंट लेटर वाला है, अगर वो वाले वर्ड आपको पढ़ने में दिक्कत है, मान लो कि आपको सिंपल सिंपल पढ़ना आता है, मान लो इसको आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कई क्या है स्पेलिंग में जैसे वर्ड साइलेंट होते हैं, वहां गलती हो जाती है कि वर्ड जैसे साइलेंट है तो वो कैसे पढ़ा जाएगा। अगर सिर्फ आपकी उतनी ही में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी मैं जो साइलेंट लेटर, जो लेटर साइलेंट होते हैं उनकी क्लासेस भी, मैं 2 से 3 क्लासेस होंगी छोटी छोटी, वो भी 15-20 मिनट की, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपको वहां कहीं दिक्कत आ रही है ना, कि आपको सिर्फ वो साइलेंट लेटर वाली स्पेलिंग्स नहीं पढ़नी आ रही, बाकी पढ़ पा रहे हैं, तो वो मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद क्लास को स्टॉप करते हैं।
तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे पहले से ताकि आपको भी पता चले कि स्पेलिंग याद हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। After a while, the hare walked up and saw the tortoise ahead of him. The hare tried to run fast, but it was too late. The tortoise crossed the finish line first. तो ये आज की अपनी स्टोरी की कुछ एक लाइनें थी जो मैंने आपको विद स्पेलिंग बोल बोल के बताई है, ताकि आपको ये भी नहीं रहे कि हाँ हमें राइटिंग नहीं समझ में आ रही, स्पेलिंग सही है क्या, कैसे लिखी जा रही है, कैसे नहीं, तो सब मैंने आपको बताया है। और आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ में भी आ रही होगी और आप सीख भी पा रहे होंगे। तो आज के लिए अपने यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।